Good morning, students. In our previous class, we have completed our chapter Factors and Multiples. Today, I am starting new chapter number 3, Whole Numbers. Now, students, you have already studied about natural numbers. What are natural numbers? When we count a number from 1, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. They are called natural numbers. But whole numbers are those numbers which start from 0. That means when we count numbers from 0, 0, 1, 2, 3, 4, so on, they are called whole numbers. So the only difference between natural numbers and whole numbers is that in natural numbers, the counting numbers start from the number 1, and in whole number, the counting numbers start from the 0. Is it clear? Now, you already know what is the meaning of successor and predecessor. Successor means after. Suppose if I tell you a number 99, so what will be the successor of 99? It will be 100. So what you have done? You have done plus 1 for getting your answer as 100. So in case for finding out successor of a whole number, what you are going to do? You are going to add 1 to a number, to a given number. Then you will get the successor of that number. Okay. Predecessor means before. Suppose if I give you a number 99. So what will be the predecessor of 99? It will be 98. Now for finding this answer, what you have done? You have subtracted 1 from 99. So for finding out successor, you have to add 1 to a given number, and for finding out predecessor, you have to subtract 1 from a given number. Now I am starting from exercise 3a. This is very simple exercise. I will just explain you and write down and you will write down the answer in your classwork copy. You have to do this whole exercise in your classwork copy itself. Don't do in homework copy. Okay. First question is, write the next 3 whole numbers after 30,999. That means you have to write the next 3 numbers. Next 3 number after 30,999. So what you will do? You will just add 1. Suppose if I add 30,000, if I add 30,919 1 to the 30,999, then it will become 9 plus 1 is 10, again 10, again 10, and this 31,000. That means after 30,999, what is coming? 31,000. Then after this 31,001, and after this 31,002. Okay, that means they have asked you next 3 whole numbers after 30,999. तो इसके बाद में आपका 31,000 आ रहा था, 1,000 के बाद में 1,001 आएगा, तो मैंने वही लिखा, and the last is 31,002. Isn't it easy? Yes or no? Now the next question. So in your copy, how you are going to write down? You will write down the question first. Write the next 3 whole numbers after 30,999. Then in answer, you will write 31,000, 31,001, 31,002. Okay. Now the next question is, write the 3 whole numbers occurring just before 10,001. Now 10,001 say, now they have given you just before. Just before means preceding. Preceding यानी पहले, यानी आपको 3 whole numbers find out करना है 10,001 से पहले. Okay. Now if you want to do the working, you can do here. So I will do in the register. I am doing in the register only. You just copy down. Okay. Students, I am not writing question.
direct doing solution. Okay, so first one is write the next three whole numbers after 30,999. So those who don't know how to find it out, you can just show the working over here. That is 30,999 plus 1 will be 31,000. Then 31,000 plus 1 will be 31,001, and then 31,001 plus 1 will be 31,002. Is it clear? Like this you can find out. अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, और डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप लोग इस तरीके से एडिशन करके कर सकते हो. एंड यू विल राइट द क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ in next question, write the whole numbers, three whole numbers occurring just before 10,001. So how you are going to do? 10,001 minus 1, because before पूछा है, before में आप subtract करोगे, so your it will come 10,000. Then again you have to find out three numbers. So this was your first number. Then 10,000 minus 1 will be 9, 9 and 9. So 9, 9, 9, 9, 9,999. And the last number is 9,998. Like this you are going to find out. Okay. Now third one is, how many whole numbers are there between 1032 and 1209. Now for this, what you are going to do is, now students, if you are going to count from 1032 to 1209, then it will take lot of time. Yes or no? 32, 33, 34, like this you cannot count. So for this, what you are going to do is, whatever number is given to you now, you just subtract it. That means what they have asked you, how many whole numbers are there between 1032 and 1209. मतलब उन लोगों ने ये पूछा है कि कितने होल नंबर्स हैं. होल नंबर्स एंड नंबर्स आर वन एंड दी सेम. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. जो नंबर्स आप लोग बोलते थे उसी तरीके से आपको बोलना है. बस होल नंबर्स में ये डिफरेंस है कि होल नंबर में बस ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. इज़ इट क्लियर? तो अब इन्होंने पूछा है कि 1032 और 1209 के बीच में कितने नंबर्स हैं. तो फॉर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you will just subtract 1209 and 1032. Okay, so 9 minus 2 will be 7, then 10 minus 3 will be 7, and then 1. That means 177 है. Now students, आपका जब आप बोलोगे इन बिटवीन बोला है, ठीक है, इन बिटवीन बोला है, डेट मीन्स आपका ये जो नंबर है 1032 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, दोबारा से -1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 176. मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर आपको बिटवीन पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दीज एंड दीज नंबर, यू विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, और जो भी आंसर आएगा उसमें दोबारा आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे. ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला है, डैट मीन्स ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग नंबर 1. ओके, सो हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1209 एंड 1032? 176 numbers are there. Is it clear? Now solution 4. Solution 4 is very simple. They have asked you which is the smallest whole number, so 0. Okay, and if they ask you which is the smallest natural number, then your answer will be 1. Now solution 5, I will only do one question for you.
first one, because they have asked you only the successor. So 2540,801. What is the successor of ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh? That means 25,40,801. So it is very simple. Last में 1 add कर दो. That means 25,40,802 will be your successor. But you have to show this working. So you will write 25,40,801 plus 1 will be 25,40,802. Like this you are going to do. Okay. Now solution 6 is write the predecessor also. So question number 5 and 6 will be your homework. राइट द प्रोड्यूसर ऑफ. राइट द प्रोड्यूसर मीन्स बिफोर वाला आपको करना है. जैसे 97 है तो 96 आ जाएगा. यहाँ पर 10,000 है तो विच नंबर विल कम? 9,999. दैट मीन्स आई एम सब्ट्रैक्टिंग 1. ओके. सो आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन डू ऑन योर ओन. बस इसमें क्या आ जाएगा? वर्किंग में आप -1 कर दोगे. ओके. नाउ सोल्यूशन 7. In question number 7, what they have asked you, write down 3 consecutive. हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, consecutive मतलब continuation में. Okay. Write down 3 consecutive whole numbers just preceding ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. That means 75 lakh, 10,000, 1. Okay. That means what you have to find out? You have to find out 3 numbers just before 75 lakh 10,001. You have already done this question in first and second. Yes or no? So just subtract 1 from it like this. 75 lakh 10,001 minus 1 will be 75 lakh 10,000. Then 75 lakh 10,000 minus 1 will be 9 and then 9. So it will become 9 then 0, then 5 and then 7. So 75 lakh 9,999. And then when you again subtract this, you will get your answer as 75 lakh 9,998. Okay. So these are the 3 consecutive whole numbers just preceding 75 lakh 10,001. Now question number 8. Question number 8 I will do here only. 0 is the smallest natural number? No. It is false. Why? Because natural numbers always start from number 1. 0 is the smallest whole number? Yes, it is true. Why? Because we always count whole numbers from 0. Every whole number is a natural number? No. Why? Because in natural number we never include 0. And 0 is what? Whole number. So this statement is false, that every whole number is a natural number. But we can say that every natural number is a whole number. हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. और 1 से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो होल नंबर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 1 is the smallest whole number? No. We already done this in second. 0 is the smallest whole number. Now the natural number 1 has no predecessor. It is true. Why?
बिकॉज द वर्ड नेचुरल नंबर इज गिवन टू यू। तो नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा होता तो आपका आंसर फॉल्स आता, क्योंकि 1 का प्रेडिसर होता है डैट इज 0। या यहाँ पर होल नंबर लिखा होता तो भी आपका आंसर क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता। ओके, क्योंकि होल नंबर का भी प्रेडिसर होल नंबर 1 का भी प्रेडिसर 0 हो सकता है। ओके, बट योर नेचुरल नंबर इज गिवन टू यू, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The whole number 1 has no predecessor. Now this statement is false because whole number 1 का predecessor तो है, that is 0. The whole number 0 has no predecessor. It is true. 0 से पहले कोई नंबर नहीं आता, तो true. The predecessor of a 2-digit number is never a single digit number. Now this statement is false. इसमें कहा है कि 2 डिजिट नंबर अगर होता है तो उसका जो प्रेडिसर होगा, प्रेडिसर मतलब जस्ट बिफोर उस नंबर का जो आएगा वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 10 क्या है? 10 इज 2 डिजिट नंबर, यस और नो? तो 10 का प्रेडिसर क्या है? 9 है। 9 2 डिजिट नंबर थोड़ी ना है, इट इज़ अ सिंगल डिजिट number, yes or no? So this statement is false. The successor of 2-digit number is always a 2-digit number. Now this statement is also false. Why? Take the example 99. 99 क्या है? 2-digit number है. But what is the successor of 99? It is 100. और 100 क्या है? 3-digit number है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? द सक्सेसर ऑफ अ 2-digit नंबर इज ऑलवेज अ 2-digit नंबर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 500 इज द प्रेडिसर ऑफ 499। 499 का प्रेडिसर 500 है? नो, 498 होगा। ओके, सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 7000 इज द सक्सेसर ऑफ 6999। येस, दिस इज़ ट्रू। सक्सेसर मतलब आफ्टर, तो 7000 जो है वो 6999 के बाद ही आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यू आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज इन क्लास वर्क कॉपी ओनली। ओके, नाउ दिस मच इज फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो। थैंक यू।